Hola a todos, buenos días, ¿cómo estáis? So today मैं आपको बताऊंगा ब्रेकफास्ट की सेंटेंसेस सीरीज। मतलब जो लास्ट लेसन में या लास्ट वीडियो में हमने सीखी थी वोकैबुलरी, उसको हम यूज करेंगे सेंटेंस बनाने के लिए। ओके, तो लेट्स बिगिन। द ब्रेकफास्ट, el desayuno। ब्रेकफास्ट इज नोन एज el desayuno। तो अब इसका हम बनाते हैं सेंटेंस। ब्रेकफास्ट इज माई फेवरेट मील। El desayuno es mi comida favorita। तो अब कलर कोड चेक करो, आपको इजी होगा याद करना। El desayuno, el desayuno es mi comida favorita। Breakfast, el desayuno, breakfast is my favorite meal। El desayuno es mi comida favorita। El desayuno, el desayuno es mi comida favorita। The sandwich, el sándwich, the sandwich is my favorite dish। El sándwich es mi plato favorito। Favorite dish, plato favorito। El sándwich es mi plato favorito। अब आप वर्ड देखिए, favorito, favorite, very similar। The bread, el pan, French bread is my favorite। El pan francés, French bread, so it's a single word। El pan francés es mi favorito। फेवरेट, favorito या favorita, जैसे हमारे हिंदी में सेंटेंसेस होते हैं वैसे ही आपको आगे जाके पता चल जाएगा। El pan francés es mi favorito। French bread is my favorite। An apple, una manzana। This apple is sweet and red। Esta manzana es dulce y roja। Esta manzana is dulce, sweet, y and roja, red। This apple is sweet and red। Esta manzana es dulce y roja। The milk, la leche. The milk is sweet, dulce. La leche is dulce. The milk is sweet. La leche is dulce. La leche is dulce. The juice, jugo, el jugo or el zumo। El jugo और el sumo दोनों ही करेक्ट हैं। कुछ कंट्रीज में हुगो बोलते हैं, कुछ कंट्रीज में सुमो बोलते हैं। El jugo is dulce, the juice is sweet, और el sumo is dulce, the juice is sweet। El jugo is dulce, el sumo is dulce। The coffee, el café, the coffee is not sweet। अब dulce is not no as dulce। El café no es dulce। The café is not sweet। The coffee is not sweet। The coffee is not sweet। El café no es dulce। El café no es dulce। कॉफी मीठी नहीं है। The tea, el té, the tea is sweet and tasty। El té es dulce y rico। Tasty, rico। El té is dulce y rico। The tea is sweet and tasty। El té is dulce y rico। The omelette, la tortilla। One omelette is sufficient for me। Sufficient, suficiente। Omelette, tortilla। One omelette is sufficient for me। Una tortilla es suficiente para mí। Una tortilla es suficiente, sufficient, suficiente। Una tortilla es suficiente para mí, for me। तो अब देखिए, जितने आप सेंटेंसेस से फेमिलियर होंगे उतना ही आप लैंग्वेज स्ट्रक्चर अपने दिमाग में स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। द मोर यू गेट कन्वर्सेंट विद द सेंटेंस स्ट्रक्चर बाय इवन नॉट थिंकिंग इट। आपको सोचना नहीं है कि यार ये कैसे बन गया सेंटेंस, बस आपको अपने दिमाग में एक बार पढ़ना है, वो ऑटोमेटिकली होगा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका स्ट्रॉन्ग होगा। One omelette is sufficient for me। Una tortilla es suficiente para mí। The food, la comida,
The food is tasty. Tasty, rico, rich, rico. La comida es rico. The food is tasty. Bonus words. El bocadillo. El bocadillo. El emparedado. Necesito 2 bocadillos, por favor. I need 2 sandwiches, please. Necesito 2 bocadillos, por favor. My sandwich always has cheese in it. Mi emparedado siempre tiene el queso. अब आपने कुछ नहीं करना, बोकादियो एम्पेरेदादो पे फोकस करना है और एक बार पढ़ना इसको जैसे मैंने बोला. I need 2 sandwiches, please. Necesito 2 bocadillos, por favor. Necesito 2 bocadillos, por favor. My sandwich always has cheese in it. Mi emparedado siempre tiene el queso. Mi emparedado. Mira sandwich, mi emparedado. Siempre tiene el queso. Queso, cheese. Mi emparedado siempre tiene el queso. Okay, that's it for today. आज के लिए यही. आप इसे पढ़िए और लैंग्वेज स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कीजिए, वोकैबुलरी दोबारा याद कीजिए. एंड अगले वीडियो में आई विल ब्रिंग समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, हasta luego.